कि डिफॉर्मेशन इस टॉपिक के अंदर जो आइडिया डिस्कस हुआ है वो ये है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि ये एक च्युइंग गम है मेरे पास, च्युइंग गम, और इसको अगर मैं दोनों साइड से खींचूं, इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस च्युइंग गम फ्रॉम टू साइड्स, अ पुलिंग फोर्स, इसको खींचूं दो साइड से, सो व्हाट विल हैपन, द गम विल स्ट्रेच आउट। So जो pulling force है, it will change the shape of chewing gum. So force, what it can do is force can change the shape of objects. Force can deform objects. इस deformation को springs में हम observe कर सकते हैं. Suppose we have a wall here. ये जो चीज बनी हुई है, this is a wall to which a spring is attached. We attach a spring to a wall, और spring की कोई एक initial length है, say 10 centimeters long, ये spring है that is attached to a wall. What will happen if I pull the spring from this end? If I apply a force of pull, इसको अगर मैं खींचूंगा, apply a force F to pull this spring, it will increase the length of this spring, it will deform the spring, और let's suppose कि इस force F की वजह से ये spring extend हो गया है, now its length is 15 centimeters. The force has produced an extension in the spring, और वो extension, how can we find the value of that extension? That is the final length of the spring minus the initial or the original length. So that is 5 centimeters of extension. Extension x equals 5 centimeters. So this force F has produced an extension x in the spring by deforming the spring. अब force और इस extension का relationship क्या है? Mathematical relationship. So that is directly proportional. Extension is directly proportional to force. What does that mean? Directly proportional का मतलब क्या होता है? Directly proportional का मतलब तीन चीजें होती हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. I first want you to look at this diagram 1. We have a spring जिसकी एक certain length है, और अभी इस पे कोई force नहीं लगी. There is no force applied to extend this spring, so the force to extend this spring is 0, and so the spring is at its original length. There is no extension. When the force is 0, extension is 0. Now if a downward force is applied to pull this spring downward, to stretch this spring downward, let's say force of 5 Newton. 5 Newton force. The spring is pulled downwards with a force of 5 Newtons. ऊपर से ये attached है wall के साथ, तो the spring will extend. ये उसकी original length थी, and now the length has increased. So an extension has been produced in the spring. Let's say the extension is 2 centimeters. So an extension of 2 centimeters is produced by a 5 Newton force. अब ये सारा कुछ एक टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं. Force F in newtons, extension x in centimeters, and जब force F 0 है तो extension x भी 0 है, और जब 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो extension 2 सेंटीमीटर की प्रोड्यूस हुई स्प्रिंग में. 5 न्यूटन फोर्स produces an extension of 2 centimeters, और उसके बाद फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज द 5 न्यूटन फोर्स टू a 10 Newton force. So this is F2, let's say. F1 is 5 Newtons and extension 1 x1 is 2 centimeters. F2 is 10 Newtons, and now the extension x2 equals say 4 centimeters. 5 Newton की फोर्स ने 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस की थी, and a 10 Newton force produces an extension of
4 centimeters, and let's take another value 15 Newton की force जब लगाते हैं, then suppose the extension is 6 centimeters. Now we have a few values of F and X. Let's say F1, F2, F3, F4. या यहाँ से F1 शुरू करें. This is F1, the force 1 is 5 Newton. And this is X1, X2, X3. Okay, if I plot a graph of force on the x-axis, मैं x-axis draw करूँगा, a force F in newtons on the x-axis, and the extension x on the y-axis, extension x in centimeters on the y-axis, और इसके एक्सेस मार्क कर लेते हैं, लेट्स से 2, 4, 6, 5, 10, 15. और अब ये टेबल की वैल्यूज इस ग्राफ में प्लॉट करने से क्या मिलेगा, we'll get few points. So when the force is 0, the extension is 0. So first point is 0, 0, that is the origin, this point. When the force is 0, the extension is 0. When the force is 5 Newton, the extension is 2 centimeters. So 5 Newton force produces an extension of 2 centimeters. अगला point यहाँ पर 5 Newton force, 2 Newton extension. When the force is 10 newtons, the extension is 4 centimeters. Okay. अगला point इधर आएगा 10 Newton force, 4 centimeters extension. 15 Newton force gives us an extension of 6 centimeters. 15 Newton force will give an extension of 6 centimeters. और इन सब points को join करें तो we will get a straight line. Roughly अगर इसको मैं draw करूं, but you get the idea. So ये it will be a straight line passing through the point 0, 0, passing through the origin, क्योंकि 0, 0 को हम कहते हैं origin. तो ये जो behavior है, this is a behavior of directly proportional. We can say that force is directly proportional to extension, right? इसको सिंबल्स में हम लिख सकते हैं. सिंबल F for force, X for extension, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये अल्फा साइन होगा. So this says force is directly proportional to X. Now this means 3 things. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का 3 मतलब होते हैं, 2 जो हमने देख लिया. First is when force increases, extension increases. Extension increases. So when force F will increase, extension X will increase, and obviously when force F will decrease, extension X will decrease. So this is one meaning of the behavior of directly proportional. एक और मतलब होता है directly proportional का, that the force extension graph, और इस केस में extension force graph जो हमने draw किया था, extension on y-axis, force on x-axis, extension force graph or extension load graph or force extension graph is a straight line. Is a straight line passing through the origin. Origin is the point 0, 0. So when force is 0, extension is 0. So these are two क्या कह सकते हैं, the implications कि जब हम कहते हैं force is directly proportional to x, that means when force increases, extension increases, and the graph of force against extension or extension against force will be a straight line passing through the origin. तीसरा सबसे important implication directly proportional का जो है, which we will use to solve questions, और वो ये है कि if I divide this value of force 5 Newton with the extension, let's say force divided by extension, और क्योंकि ये first values हैं, F1 divided by
extension 1x1 equals 5 divided by 2 equals 2.5. Alright, what happens अगर मैं अगली दो वैल्यूज को डिवाइड करूं, f2 divided by x2 will give me 10 divided by 4, that is also equal to 2.5. The next pair of values, f3 divided by x3, 15 upon 6, that is also equal to 2.5. इसका मतलब है f divided by x is always a constant value, constant number, and we can call that constant number k. F over x is equal to k, always one number, और k इस केस में क्या है, k equals 2.5 for this particular case. इस स्प्रिंग के लिए k is equal to 2.5, कि जब भी फोर्स और एक्सटेंशन की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं we get 2.5. Now this also means, अगर इस look at this equation, इस equation को rearrange करूं मैं and I multiply x over here with k, what I get is force equals k multiplied by extension. तो अगर मैं extension को 2.5 से यानी k से multiply करूं तो I will get force. If I multiply 2 by 2.5 I'll get 5. If I multiply 4 with 2.5 I'll get 10. If I multiply 6 with 2.5 I'll get 15. So whenever I multiply k, that is 2.5, with the extension, I get the value of force. तो ये तीसरा force is directly proportional to extension का तीसरा implication क्या है, we can write force equals k time x, और ये भी कि force divided by extension हमेशा a की वैल्यू रहेगी k, और that also means this is star star star, very important, f1 divided by x1 will be equal to f2 divided by x2, and obviously that will be equal to f3 divided by x3. Alright, अब इन concepts को use करने के लिए attempt some practice questions. Practice question में वो कह रहा है a spring has an unstretched length. What? Unstretched length, इसका क्या मतलब है? Unstretched length का मतलब है when no force is applied to stretch the spring. So this is the original length of the spring, that is 12 centimeters. Okay, extension load graph, that means x f graph. Load means the force applied to stretch the spring. So extension load graph का मतलब extension is on y-axis, load is on x-axis, और ये इधर given है extension on y-axis, load on x-axis, and the extension load graph for a spring is shown below. What magnitude of force, that means what value of force, will increase the length of the spring to 15 centimeters. Alright, the original length of spring की है 12 centimeters and increased length 15 centimeters है, तो पहले हम देखते हैं कि extension x कितनी produce हो रही है. So its length has increased to 15 centimeters. Original length उसकी थी 12 centimeters. So the extension produced is 3 centimeters. Now we see which force will give us an extension of 3 centimeters. We can use the extension load graph for that. So 3 centimeters की extension produce करने के लिए we see के graph में what force will be required. So it would be a 6 Newton force would be required to increase the length of the spring from 12 to 15 centimeters. Right, next. Extension load graphs for 2 springs are shown. इसका मतलब comparison हो रहा है, इसमें 2 springs are shown. Which spring is more difficult to extend? Difficult to extend, इसके दो मतलब हो सकते हैं. पहला तो ये कि किस में less extension हो रही है, दूसरा ये किसको more force required है to extend. So difficult to extend we can check. पहले तो हम force constant force रखते हैं. Let's say any value of force F1. इस पे देखते हैं spring B में कितनी extension हो रही है और spring A में. So at a force F1,
spring B gives an extension of, let's say, this much x b, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बी, और इसी फोर्स 1 के ऊपर स्प्रिंग ए में कितनी एक्सटेंशन हो रही है, लेट्स से इट्स हियर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ए. अब सेम फोर्स अप्लाई हुई दोनों स्प्रिंग्स पे and extension in B was less, extension in spring A was more, so that means spring B is more difficult to extend. And the reason, same force was applied to spring A and spring B. Spring B में extension थोड़ी हुई, spring A में extension ज़्यादा हुई. We got them from the extension load graph. इसको देखने का एक और तरीका हो सकता है. Let's say we consider the same extension in both springs. Extension x1. इस extension को produce करने के लिए spring A में कितनी force चाहिए? This much force to stretch spring A to x1. इसी एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग बी में कितनी फोर्स चाहिए? दैट इज अ ग्रेटर फोर्स. सो अगेन स्प्रिंग बी इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सटेंड. ओके, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, एक्सटेंशन इज 2.36 सेंटीमीटर. सो इतनी फोर्स एफ है, इतनी एक्सटेंशन है. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन अ फोर्स ऑफ 7 Newton is applied? Let's say this is F2. So when F2 7 Newton is applied, what is X2? X2 equal to what? We have one pair of values F1 and X1, और अभी हमने पढ़ा है कि since force is directly proportional to extension in the spring, F1 upon X1 equals F2 upon X2. अब ये सिंपली वैल्यूज प्लग इन कर देंगे यहाँ सारी. 16 दैट इज f1 अपॉन 2.36 इक्वल्स 7 अपॉन x2. इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को. x2 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 2.36 अपॉन 16, और यहाँ इन सेंटीमीटर्स वील गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज f2, दैट इज 7 न्यूटन. Okay, last question. The extension load graph of a spring is shown a mass m kg. Okay, m kilograms is hung with the spring. इसमें हो क्या रहा है? Let's go back to the question. किधर है ये रहा? We have a spring. ये कोई support है जिसके साथ एक spring attached है. Let's say particular length spring. और इस स्प्रिंग को क्या किया? दे अटैच्ड अ मैस m kg, m kilograms विद द स्प्रिंग. उससे ऑब्वियसली ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा. लेट्स ड्रॉ द मैस m ओवर हियर. ये इसके साथ हैंग कर दिया. मैस m kilograms is hung with the spring and that produced some extension in the spring. उसने स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंशन x. That produces an extension of 4 centimeters. उसने extension भी दी है, that is equal to 4 centimeters. Calculate the value of m. कि कितना mass attach करेंगे तो ये 4 centimeter की extension आएगी. Now what we need to understand is कि इस mass का एक weight होगा, weight that acts downwards, weight w, और ये weight ही वो force होगी that extended the spring. अब इसने 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया. एक्सटेंशन लोड ग्राफ से हम देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है. इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन लोड ग्राफ है. इस पे 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स चाहिए होती है दैट इज 8 न्यूटन. दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग वाज 8 न्यूटन. दैट मीन्स द वेट ऑफ द मैस, जो वेट था उसका, वेट इज अ फोर्स, दैट वाज 8 न्यूटन. Now recalling the formula from the chapter mass, weight and density, W equals mg. Weight equals mass times gravitational field strength. यहाँ से mass would be equal to W divided by g, जो कि है W. weight is 8 Newton,
Gravitational field strength is 9.8 and that will give us the mass in kilograms जो अटैच किया गया था. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अभी हमने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा. F1 over x1 will be equal to F2 over x2. अब इस चीज की एक लिमिट है. this will not always be true. There is a limit to this and that limit is limit of proportionality. Now let's understand what happens when the limit of proportionality of the spring is reached. ये एक spring है. Here we have a spring hung with a support और हम क्या करें, इसकी एक particular length है. We apply a force that pulls the spring, that stretches the spring, a downward force. Or we record the values of extension against the values of force. So we have force F Newton, F in newtons, and extension X in centimeters. और हम इसकी कुछ values record करते हैं. So let's say we have a set of values. When the force is 4 Newton, the extension produces 2 centimeters. 6 Newton force will give an extension in this spring of 3 centimeters. 10 Newton की force 5 centimeter की extension देती है. 16 Newton force 8 centimeter की extension देती है. And let's say यहाँ पे इस spring की limit of proportionality reach हो जाती है. Proportionality. Limit of proportionality से पहले क्या हो रहा था? Force was directly proportional to extension. That means extension और force का ग्राफ बनाते थे, या force और extension का ग्राफ, it was a straight line passing through the origin. इसका मतलब था force was always equal to k times x. इसका मतलब force divided by extension was always equal to a constant value, and that means F1 over x1 was equal to F2 over x2. ये सारा मतलब था कि force was directly proportional to extension, but beyond the limit of proportionality, जब एक खास लिमिट इंक्रीज यानी इससे ज्यादा फोर्स अब लगाएंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा. स्प्रिंग का बिहेवियर चेंज हो जाएगा इससे ज्यादा फोर्स लगाने से. लेट्स से वी अप्लाई एन 18 न्यूटन फोर्स, द एक्सटेंशन इज 10. 22 न्यूटन फोर्स पे एक्सटेंशन वी गेट इज 13 सेंटीमीटर. अभी तक क्या हो रहा था? लेट्स से f ओवर x क्या था? 4 over 2, that was equal to 2. F1 over x1. F2 over x2 क्या था? 6 over 3, that was 2. F3 over x3 क्या था? 10 over 5, that was also 2. 16 over 8 was also equals to 2. So f over x was a constant value k, और इस spring का k था 2. Now beyond this limit of proportionality क्या हुआ? If we divide force with extension 18 upon 10, we get 1.8. Look, k की वैल्यू चेंज हो चुकी है. अगली फोर्स को एक्सटेंशन से डिवाइड करते हैं. 22 divided by 13, we get almost 1.7. k की वैल्यू दोबारा चेंज हो रही है. So force is not equal to k times x. That means force over x is not a constant value. इसका मतलब force is not proportional to x. Proportional नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. ग्राफ में क्या होगा? Let's say we have a graph, extension in centimeters against force in newtons, और ये स्ट्रेट लाइन था जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच नहीं हुई थी. Let's say this point is the limit of proportionality of spring. इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो force will no longer be proportional to the extension, और इसमें extension ज़्यादा हो जाएगी. The graph will curve upwards. See? Extension is on y-axis. Upwards extension increase कर रही है, तो beyond limit of proportionality extension ज़्यादा हो जाएगी with the same amount of force. तो the graph will not be a straight line. No longer a straight line. तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये क्या है?
the force or the point beyond which extension is no longer proportional to the force applied. That's all.